Good morning students, welcome to Commerce Gyanpeeth Odisha. Today we will be starting with the companies acts last class. ठीक अच्छी ना last class रे कौन आमे discuss करिया जे तो exams are very near, exams are approaching तो आमे जो जिनसे discuss करिया सेटा most important from the exam perspective relevant for the attempt December 2024. ठीक अच्छी एबे जे जहाँ भी आमे करथिलु से सब जा कौन first unit रो important portion एबे आमे remaining part रे देखिबा कौन को questions आसी पारिबो. Fine. वॉइस इज क्लियर और नॉट सब जिनस कन्फर्म करियो ऑनलाइन रे संगे संगे हैला. तो फर्स्ट एबे लेख स्वेट इक्विटी शेयर्स हेडिंग दियो स्वेट इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स sweat equity shares sweat equity shares एडा को अटेम्प्ट रे पचारले देखो 2019 डिसेंबर एमटीपी 2020 आरटीपी 2018 एमटीपी 2017 और अगेन 2019 आरटीपी रे पांचटा जा जिनस रे ये एडा हेगरी अछि स्वेट इक्विटी शेयर्स अगेन एंड अगेन आछि मध्य एग्जाम रे हैला. तो ध्यान देकी सुनिबो कांसेप्ट ता एडा गुटे पॉसिबल क्वेश्चन हमरो स्वेट इक्विटी शेयर्स according to section 2 subsection 88 section 2 subsection 88 sweat equity shares are defined sweat equity shares are defined as equity shares issued by the company to its cargo na directors or employees at a discount or for consideration other than cash other than cash एडा होची तार बेसिक मीनिंग. फर्स्ट टाइम में कौन डिस्कस करछ ना स्वेट इक्विटी शेयर्स रा मीनिंग कोन व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट माने होची पसीना इक्विटी शेयर्स से कहूची पसीना इक्विटी शेयर्स इन द सेंस कोन ना गुटे एम्प्लॉय रीजन कोन त नारो गुटे एम्प्लॉय से बहुत कष्ट करियो गुटे ऑर्गेनाइजेशन भितरे सर्वाइव करिया पे बहुत किछि काम से करिवो तो इक्विटी शेयर्स जोडे कि ता कष्ट रे से अर्न करूची ता कष्ट रे अर्न करची माने कोन ता कष्ट रे से रेलेवेंटली कोन करची से जिंसडा पाउची से बहुत दिन हैला से कंपनी रा काम करिगिरी कोन होची ताकू कंपनी किछि रिवार्ड देबागु चाहुची तो जदि रिवार्ड जेतलो को देबाउ चाहुची तो द कंपनी इज ऑफरिंग देम स्वेट इक्विटी शेयर्स. क्लियर एज सिंपल एज दैट. तापर लेखो ए पॉइंट ब्रेक डाउन करिके लेखो तो मो इजीली बुझा पड़ियो. तो एडा कोन पे दोची ना for providing their know-how or
making available or making available rights in the nature of rights in the nature of intellectual property or rights or value addition rights or value addition सुंदर पिल्लार सुंदर फोन डाना रागी होची मो ऊपर तो से कौन कहूँ देख स्वेट इक्विटी शेयर्स माने कौन ना जनरली जदि गोटे एम्प्लॉय कष्ट करी किछि शेयर्स अर्न करछि बट से कष्ट कौन आले से कहूँ कष्ट करछि माने कौन डेली आछि कष्ट पड़छि सोई पड़छि ऑफिस रे डेली कष्ट रे आछि खाली खाइगिरी लंच आवर पर पळोछि ए जा सब कष्ट आली कई कंपनी कंसीडर करनी कंपनी को जिंस कष्ट कंसीडर करछि ना फर्स्ट होची नो हाउ प्रोवाइड करिवो व्हाट डू यू मीन बाय नो हाउ ध्यान से सुनो माने गोटे मशीन टे अछि से मशीन तांके किनि चंदी कि सेडा तांको बहुत हेल्प हबो कहिगिरी बट अल्टीमेटली से मानको जाना नै कि से जिंसडा किंदी यूज करले तांको कॉस्ट कम पड़िबो कहिगी तो गोटे एम्प्लॉय अछि जे कि तांको बुझे लागि से जिंसडा किंदी हबो नो हाउ कौन बुझौछि से जिंसडा किंदी हबो हैला तो सेडा होछि हमर फर्स्ट पॉइंट रो मीनिंग दैट्स नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स माने कोन ना गोटे प्रॉपर्टी यूज करिया पे तमे किछि राइट्स प्रोवाइड करछो किंबा प्रोवाइड करिया पे रेकमेंड करछो मनर गोटे कंपनी अछि ताकू वेयर हाउस दरकार पड़ला हेले से वेयर हाउस टा पूरा माने कोन मार्केट प्लेस मझिरे अछि जदि ताकू से जिंसर परमिशन मिल जाउची राइट मिल जाउची तो ताकू सेडा कोन बहुत किछि हेल्प हेई पारिबो तो जेतु बहुत किछि हेल्प हेई पारियो गोटे एम्प्लॉय कोन करछि रेकमेंड कर दोची कि तू टिके इंदी करी दे कहिगिरी बुझला तो दैट्स एडा कोन हला मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ intellectual property रो मीनिंग होची पेटेंट्स कॉपीराइट्स ट्रेडमार्क ब्रांड एक्सेट्रा जदि जनकर ब्रांड नेम यूज करिया पे तुमको राइट मिल जाउची तो तुम बिजनेस टा बहुत बढ़ी जिवो जानिबा कथा ना नहीं बुझला ना राइट्स और वैल्यू एडिशन तो जहा हेले भी हेई पारियो तो जदि गोटे एम्प्लॉय इमिति किछि बेनिफिट प्रोवाइड करछि कंपनी को जोथरे कि से कंपनी रो बिजनेस टा बहुत इंप्रूव होची किंबा बिजनेस करिबारे ताको बहुत हेल्प हेई जाउची किंबा रेवेन्यू बढ़ुची तो से केस रे कोन हबो से एम्प्लॉय मानन को मिलबो कोन स्वेट इक्विटी शेयर्स बुझिला बढ़िया निद लाउची इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पाखरे लेख कॉपीराइट्स पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स ब्रांड एक्सेट्रा copyrights patents trademarks brand etc ये क्वेश्चन पचार से 8 मार्क्स में नहीं ये नहीं ना अरे मो धीरे धीरे करी पढ़ो तुम मैंने जेतु बोर हो जियो कई स्वेट इक्विटी पाठ स्वीट इक्विटी शेयर्स हाउ स्वीट मिल्की बार दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड पिला ने खाओ चंदे मो कहि देली कहीं मिल्की बार हम पैसा दो ना चॉकलेट दो ना कौन दो हमें कौन पे कहे तो लेखा नेक्स्ट पॉइंट स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इश्यूड मो पूरा शॉर्ट करिकी लेखौची तमे एडा इलैबोरेट करियो एग्जाम रे मन रखिया देखो इमिति आगे लिखिबा पड़िबो जदि तमे लॉन्ग करिकी लिखियो पढ़ियो मध्ये इच्छा हबन
एंड मु एते कष्ट करिकरी कम कर देछि सेडा माने मनर फर्स्ट पॉइंट रे मु कोन लाइक फर्स्ट केस रे मु कोन पढौथिली सब जिंस जा पढौथिली जेतु तमरो फुल मार्क्स आसीबो कहिकरी तापर केस रे मु कोन करली कि नाही इमति जदी पढिबी बोर हे जोजो टोटली सुनिबनी तो देयर्स नथिंग इफेक्टिव इन दैट थर्ड केस रे मु कोन करली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स फर्स्ट कवर कर देली एबे फर्स्ट चैप्टर रो जोडा डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे बारंबार बारंबार पचाछि सेडा हमें इन डिटेल डिस्कस कर दोछ तो जदि तमे एडा को ध्यान दबनी तो किछि मध्ये हेई पारियनी आडू कम हेई पारिबनी एतिकी तो हेयला टेलर पाखु जियो थोड़ा शॉर्ट करो और थोड़ा शॉर्ट करो माने गोटे लेवल पर से शॉर्ट करि पारियनी ड्रेसटा तो मु होची से टेलर जे कि एबे ए लेवल पर और शॉर्ट हेई पारियनी एंड योर बर्थडे इज अप्रोचिंग बर्थडे माने कोन एग्जाम्स समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा स्वेट इक्विटी शेयर्स sweat equity shares can be issued only if the following conditions are satisfied only if the following conditions are satisfied अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बुझा पड़ची ना किछि डाउट अछि लिखले प्लीज कंफर्म clear thank you first lekha special resolution issue authorized by special resolution issue authorized by special resolution issue authorized by special resolution tapare the resolution specifies इमती करिके लेख ब्रेक डाउन करिके फर्स्ट थिंग होची number of shares current market price number of shares current market price consideration if any class or classes of directors class or classes of directors or employees to whom such shares are issued एडा ऊपर तमे मार्क करो कि ए जिनसडा जहा अछि सेडा क्वेश्चन मध्ये पचारछि तमरो 2 मार्क्स पे चारटा जा पॉइंट्स लेखियो पड़ियो माने रेजोल्यूशन भितरे कोन कोन रहियार अछि स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करिया आगरे से जिनसडा मध्ये से पचारछि तडा इंपोर्टेंट मार्क करियो क्वेश्चन मजरे क्वेश्चन एडा हैला देन इमती करिके लेख if
सुंदरी जा मु जानची दिजण मुह दिजण कोन पे देखो एडी देखो if sweat equity shares जदि लिस्टेड हेगी अच्छंदी कौन हबो अनलिस्टेड हेगी अच्छंदी कौन कर लिस्टेड माने जानचो लिस्टेड ऑन व्हाट कोडी लिस्ट होची स्टॉक एक्सचेंज हाँ एडी अच्छी कोन एडी अच्छी मते दुसची एडी रही छी लिस्टेड जदि होची कहले the sweat equity shares must be issued in accordance with SEBI regulations SEBI माने कौन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ता रेगुलेशंस हिसाब रे से इश्यू करची कहिगिरी गुटे पर्टिकुलर रेजोल्यूशन रे रहिबा कथा एंड जदि अनलिस्टेड रहुची तो अनलिस्टेड केस रे कोन हबो द स्वेट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इश्यूड in accordance with prescribed rules in accordance with prescribed rules शेयर सर्टिफिकेट विषय में ऑलरेडी डिस्कस कर देथिले ना एति की बुझा पड़ला ना किछि डाउट अछि मगेन कहि दोछि देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स रो मीनिंग बुझा पड़ला देन से कोन पे से दोछि सेडा बुझा पड़ला एडा होछि हमर पर्पस रे हैला जदि पर्पस रे तुमको 1 मार्क पे 2 मार्क्स में पचारियो तो कंफ्यूज होबन दिस इज पर्पस दिस इज मीनिंग मु क्लासिफाई कर दोछि मीनिंग एडा होछि हमर कोन कंडीशंस बुझला स्वेट इक्विटी शेयर्स से 3-4 थरे पचारछि तो प्रोबेबिलिटी अछि तो से कौन कहूची जदि स्वेट इक्विटी शेयर्स तुमको इश्यू करिवार अछि यू हैव टू फॉलो 3 थिंग्स फर्स्ट थिंग होची इश्यू ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन माने कोन मीनिंग कोन एडार भलसे सुनो सब ध्यान देगरी इश्यू माने कोन ना सी स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करबा को चाहूची तो से इश्यू करबा को चाहूची जहा सेडा स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू रे अप्रूवल आनिबार अछि मेंबर्स पाखरु से कौन आनिबो अप्रूवल आनिबो ऑथराइजेशन आनिबो कि मु स्वेट इक्विटी शेयर्स अप्लाई करूची देन रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज 4 थिंग्स कौन नंबर ऑफ शेयर्स केतरा तमे इश्यू करबा चाहछो करंट मार्केट प्राइस कौन से शेयर्स रो करंट मार्केट प्राइस कौन से कंपनी रो शेयर्स रो कंसिडरेशन इफ एनी तमे जो एम्प्लॉय मानो को दोचो सेडा से कहिची कौन फ्रीली हेई परियो किबा किछि कंसिडरेशन पे हेई परियो तो जदि कंसिडरेशन नोचो what is the amount of consideration you are charging then class or classes of directors or employees to whom such shares are issued का कागो से कौन करची से स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करूची खाली एम्प्लॉयज को करची ना डायरेक्टर्स को करची ना एम्प्लॉय डायरेक्टर समस्त करची ना कौन बुझला ना नहीं इज इट क्लियर कंप्लीटली क्लियर बुझा पड़ला ना एबे तापर से कौन कहूची जदि स्वेट इक्विटी शेयर्स जहाँ भी अच्छी से गुड़ाक जदि लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज माने कौन शेयर्स गुड़ाक आमको कौन स्टॉक एक्सचेंज रे मिलुची कहले कौन हबो ना से सेबी रो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करियार अछि जदि ताको स्टॉक एक्सचेंज रे मिलोनी तो से केस रे कौन लिस्टेड जदि हेनी
तो कंपनी रो रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो कर, दैट्स इट. इज इट क्लियर एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके. देन लास्ट पॉइंट लेख एडार 8 मार्क्स आसिले एते जा सब लिखियो पड़ो. हैशटैग करके लेख. A company other than a company other than a listed company, a company other than a listed company, a company other than a listed company shall not issue sweat equity shares, shall not issue sweat equity shares to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, or for consideration other than cash for providing in the star mark पके दियो, स्टार मार्क पकेगिरी ए पॉइंट हाइलाइट कर दियो कहीं सेम पॉइंट से कहूँ जदि चाहिए पर लिखिपर से आम चाहूनु एल कह राइट. इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए था. and unless the issue is authorized by special resolution at general meeting. एडा होची तमरो केस लॉ क्वेश्चन. केस लॉ क्वेश्चन कौन कहूँ देख गोटे पॉइंट ये हाइलाइट करियो अदर देन लिस्टेड कंपनी. प्लीज अंडरलाइन अदर देन लिस्टेड कंपनी. माने से कौन कहूँ जदि लिस्टेड कंपनी अच्छी, ध्यान से सुनो, लिस्टेड कंपनी जदि हेगिरी अच्छी तो ताकू दरकार नहीं कि से कौन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करी समस्त अप्रूवल आनिकी तापर स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करिवो. लिस्टेड कंपनी को से रूल फॉलो करिया दरकार नहीं, नेसेसिटी नहीं. बट जदि अनलिस्टेड कंपनी अच्छी से कौन करिया बाध्य हेगिरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिवो, जनरल मीटिंग रे अप्रूवल आनिवो, तापर आगे से कौन करियो स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करि परिवो. क्लियर और नॉट? बट प्रोविजन टा तुमको पूरा लिखिबार अछि, दैट्स व्हाई मु लिखिली. तो केस लॉ क्वेश्चन टा तो एटार सिंपल मीनिंग होची a listed company is not required to pass any special resolution at GM for issue of sweat equity shares,
shares. For issue of sweat equity shares. But an unlisted company has to mandatorily follow that, has to mandatorily follow that, has to mandatorily follow that. तृप्ति पठे दे, तृप्ति पठे दे, जा पड़ा जा। अंदर से सब लोग टूटे हुए भंगा रोड़ा जिनस भंगी भंगी comes under section 2 subsection 88 of the Companies Act. हाँ 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 आसंतु आगे आसंतु जानिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स विषय बुझा पड़ला, वर्षा बुझा पड़ला, रुद्र बुझा पड़ला, तृप्ति बुझा पड़ला, सुहाना बुझा पड़ला, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बुझा पड़ला ना नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ हाँ कि हाँ हाँ कि हाँ क्लियर? हाँ यस सर, यस और हाँ ठीक अच्छी। बोनस शेयर्स विषय में डिस्कस करची, बोनस शेयर्स विषय में डिस्कस करची। हाँ कि यस यस हेले आउ थरे कही आओ। करिचंदी ना? हाँ ठीक अच्छे फाइन। प्लीज राइट डाउन गोटे केस लो क्वेश्चन आसुची हमरो रिपीटेडली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विषय, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विषय गोटे केस लो क्वेश्चन ने हमें देखिया पाउछु। से क्वेश्चन टा तमे टेक्स्ट बुक रे मिलिबो बट यू हैव टू सर्च, तो से पॉइंट टा खाली लिखि दियो, तुमको बारंबार खोजिबा को पड़ियोनी। हेडिंग दियो। अरे भाई कलर आगा खाली सुंदर अक्षर नहीं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आनी लेखुन स्केच पेन जागो मना करछि के जा हो। हाँ पूरा हाँ बेले ता आगरे सोउथिलो। हाँ केते नहीं सीरियसली ऑनेस्ट पिलड़ा कोची बट शी इज लिसनिंग नाउ हैप्पी। एटा आरटीपी ना एमटीपी मते मन नहीं बट ए दिथर जागा मु देखिची। स्कैनर क्वेश्चन रे से आछि 2014 जून। देखो डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस पूरा फिल्टर आउट करके कोच एबेले पढिया नेली कहले नाई कुट्टी ना कोन छेची दी फिंगी दी भंगाओ दे दी हाँ कौन माने वेरी गुड लेखो according to section 35 according to section 35 according to section 35 of the Companies Act, according to section 35 of
Companies Act. According to section 35 of Companies Act, a certificate of incorporation, a certificate of incorporation, a certificate of incorporation, a certificate of incorporation given by ROC, given by ROC shall be conclusive evidence, shall be conclusive evidence of all requirements of all requirements and no individual can question about the incorporation certificate issued or matters incidental thereto, or matters incidental thereto, or matters incidental thereto. नहीं मुझे भी नहीं, माना कि मैं अंदर से टूटी हूं पर आई एम नॉट भंगी. क्षीरदांत. तो क्वेश्चन देखो, इट्स फ्रॉम पेज नंबर, स्कैनर पेज नंबर कोची ए कथा नहीं, पेज नंबर 5.353. जब स्कैनर अच्छे देखो ना पीडीएफ रे पर देखो. क्वेश्चन कोची पूरा सुनो भल से. The memorandum of association of a company was signed by 2 adult members. 2 जन adult member sign करचंदी, आ गोटे गार्डियन जे कि 5 फाइनर मेंबर्स रो गार्डियन, माने 5टा छुआ मानकर गोटे गार्डियन आ 2टा adult member sign करचंदी memorandum of association. बुझला. तापरे कहूची the registrar registered the company and issued under his hand a certificate of incorporation. The plaintiff commented that conditions of registration were not duly complied with, that there were no 7 subscribers to the MOA. Will the tribunal uphold his contention? तो सी कहूची देखो कौन से क्वेश्चन देइथिला एग्जाम रे सेडा म बुझौची. फर्स्ट MOA जहाँ भी अच्छे हमरो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेडा के साइन करची, साइन के करची, के करची 2टा अडल्ट आ 5 माइनर्स रो जणे गार्डियन. तो के जण हेले 7 पीपल रिप्रेजेंट हेचंदी, बट सिग्नेचर टा के जण 3 जण आगे करचंदी. तो एडा कोन आरओसी पाखो को गल्ला, आरओसी सेडा को ठीक कहिगिरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ला कोन करला इश्यू भी कर देला. तो एबे जणे लोक भद्र लोक आसी के से कोन कहूची कि तमे जेडा करला सेडा भूल, गलती से मिस्टेक हो गया है. एबे कोन ले गोटे कर काहे गेले 7 जण साइन करनांती, तो मु एडा ऑब्जेक्ट करछि. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट से कहूची कोन जदी वंस आरओसी जदी किछि इश्यू कर दोची
को हेले पर्सन आसिकी से जिनसटा क्वेश्चन करि पारिबो नाही ए सेम क्वेश्चन टा तुमको अलग अलग मेथड्स रे पचारिबो से एटा भूल अछि एमओ ए भूल अछि गोटे पर्सन आसिकी कहूची किए गोटे गवर्नमेंट रे एम्प्लॉय आसी कहूची कि डायरेक्टर कहूची किए हेले को आरओसी जदी इश्यू कर दोची माने आरओसी इश्यू एडी करला एली कहले ता आगो जे तमे जहा कहले भी चलछि बट आरओसी इश्यू कला परे परे किछि हेले कहि परियन किछि हेले कहि परियन ऑब्जेक्ट करि पर बुझिला ना नहीं वेरी इंपोर्टेंट केस ला क्वेश्चन बुझिला समस्त प्लीज कंफर्म ओके ओके आ गोटे केस ला क्वेश्चन लेख नेक्स्ट केस ला क्वेश्चन whenever 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 certain liability whenever certain liability has incurred 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 after obtaining a certificate after obtaining a certificate of incorporation after obtaining a certificate of incorporation but before commencing the business before obtaining certificate to commence the business certificate to commence the business माने से कहूँ कौन देख एडी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने रे पूरा क्लियरली बुझ मु कौन कहूँ गुट थोड़े मन रही जाओ आ पढ़े वाले दरकार नहीं एडी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टा मिलना एडी मिलची हमर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैला ए पीरियड रे मिल जाइछि हमको ऑलरेडी एडी मिल जाइछि आ ए पीरियड रे मिलनी ए पीरियड रे हमको कौन मिलला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलला आ एडी कौन करला हमें स्टार्ट करलो एक्चुअली तो सी कहूँ ए भितरे जदि किछि एक्ट्स ही जोछि जदि गोटे पर्सन का पैसा देला कि ता बारू सामान नेला कि कौन हैला तो सेडा से कंपनी को क्वेश्चन करि पारिबो कि जदि कंपनी बंद हे गले कंपनी को क्वेश्चन करि पारिबो कि तो एक्ट कौन कहूँ जानछ ना एक्ट कहूँ क्वेश्चन करि पारियन काहेकि ताकू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलिछि माने कंपनी रा इनकॉर्पोरेट हेबा पई सर्टिफिकेट मिलिछि बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलिछि कि नाही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस माने कौन बिजनेस स्टार्ट करिया पई सर्टिफिकेट ता जेते पर्यंत ताकू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलनी सेते जे से कौन किछले बिजनेस एक्टिविटी करिवनी जदि बा करला तो सेटा केबेले लॉफुल नाही कि किया आसी कि ताकू क्वेश्चन करि परिबो बुझा पड़ला डायरेक्ट क्वेश्चन आसुछि केते मार्क्स रो इट्स आस्क फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन 2017 डिसेंबर गुरथरे 2015 डिसेंबर गुरथरे 2017 डा सेटा एमटीपी क्वेश्चन डा 2017 एमटीपी 2015 डिसेंबर एडा होची पेज नंबर 5.354
whenever certain liability has incurred after obtaining a certificate of incorporation but before obtaining certificate to commencement of business, lekha any transactions any transactions any transactions or provisions any transactions or provisions any transactions or provisions shall not be binding on the company till it receives the certificate to commence business certificate to commence business. लास्ट आउ दीटा क्वेश्चन रहा सान सान से सरले तुम कंपनीज एक्ट सर टोटाली एकदम जी लिखे खाली से प्रिपेयर हम यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन लॉ सीरियसली कहूँ लॉ आज जाए तुम कौन पढ़ कौन पढ़न मुझे जानी केते बुझा पड़ी मुझे जानी बट मु गोटे जिन अश्योर करी ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब पूरा मोर कंपनीज एक्ट टोटल लेक्चरटा अच्छी बारंबार करके देख से स्कैनर क्वेश्चंस भी से डिस्कस अच्छी एमटीपी आरटीपी वर्कबुक एंड स्कैनर 4 थिंग्स आर कवर्ड इन दैट कंपनीज एक्ट बहुत भल से सार देन गो विथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट मु स्ट्रेटजी कही दउची सेल ऑफ गुड्स एक्ट देन गो विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीनटा जिनस एकदम सारिबो मु डेफिनेटली अश्योर करची अलोंग विथ एथिक्स 60 प्लस आराम से स्कोर करि परियो डेफिनेटली डैम श्योर स्कोर करि परियो बिट क्वेश्चंस मध्य से मझिरु आगा आसीबो कहीं से गुड़ाक हाइलाइट कर ऑलरेडी टेक्स्ट बुक रे फाइन तो लास्ट दीटा क्वेश्चन रहा आमर कंपनी एक्ट रो एबे लेख फर्स्ट मीटिंग रो गोटे क्वेश्चन टा जोड़ा कि से पचार मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग सेटा एते से आगरे जति पचार पचारनी बट 2019 डिसेंबर से पचार annual general meeting annual general meeting annual general meeting जी पॉइंट्स लेखा खाली से लेख एनुअल जनरल मीटिंग एडा गोटे पॉइंटा से तुम टेक्स्ट बुक रे देनी बट फिल इन द ब्लैंक्स माने बिट क्वेश्चंस रो जहां भी अछि से पॉइंट्स रे तुमको पचारची यार Now in India, all companies except 1% companies are required to hold an annual general meeting. 1% companies को annual general meeting ना hold करिया दरकार नहीं माने चाहिए से करि परिबो बट कंपनी एक्ट कहूँ से न करले मध्य चलिबो तो AGM is mandatory to all companies except 1% company बुझा पड़ला पॉइंटा बुझला the first AGM must be held within 18 months
First AGM must be held within 18 months of company's incorporation of companies incorporation of companies incorporation. Excuse me. The first AGM must be held within 18 months of incorporation and subsequent or next AGMs. बाकी सब AGMs किमती held हबा. Subsequent AGMs must be held within. Subsequent AGMs must be held within. First thing होची 15 months of previous AGM. 15 months of previous AGM. 15 months of previous AGM or September 30 of each year. September 30 of each year, whichever is earlier. Mama se charger take whichever is earlier. Thank you. Whichever is earlier. तुमको बारंबार केस क्वेश्चन आसुची हैला देखिला बेले लागुथियो तुमको एनुअल जनरल मीटिंग टा केबे हेल्ड हबो ना फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विल बी हेल्ड विद इन 18 मंथ्स ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन माने कोन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो दिन आसीबो हैला कंफ्यूज हबोनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो दिन आसीबो से दिन रो 18 मास भितरे ताकू फर्स्ट एजीएम कंडक्ट करदार अछि और नेक्स्ट एजीएम केबे करिवो ना 15 मंथ्स ऑफ प्रीवियस एजीएम और September 30 whichever is earlier जोड़ा आगे पढ़ोची कोडी हेल्ड होची held at company's registered office company's registered office or city town or village where registered office is located can't be held on national holidays. Can be held only between 9 AM to 6 PM. 9 AM to 6 PM. तापरे most important point and last point 21 days clear notice 21 days clear notice must be given 21 days clear notice must be given I hope सब जिनस मु डिस्कस करि देछि गुट्टे आगे रही जाइछि लास्ट जस्ट 2 मिनिट्स लागिबो
सेडा ले तमर पूरा कंपनीज एक्ट सॉरी कहीं से भितर क्वेश्चंस पचार आम भितर क्वेश्चन कनेक्ट करिया प्लीज देखो कि शेयर सर्टिफिकेट मु कोडी डिस्कस करछि शेयर सर्टिफिकेट विषय देखो वंस रिसेंट टाइम्स रे डिस्कस करथिली ना शेयर सर्टिफिकेट ता मिलला कि हाँ छाड़ लिखि दियो शेयर सर्टिफिकेट जोड़ी मिले से लिखि दियो परे शेयर सर्टिफिकेट रेन्युअल एडार क्वेश्चन से पचार आमको केते मार्क्स पे December 21 वेरी रिसेंट क्वेश्चन December 21 6 मार्क्स में पचार बहुत इजी क्वेश्चन है बट 6 मार्क्स में पचार तो लिखो issue of renewed share certificate issue of renewed share certificate तीन पार्ट्स करो फर्स्ट लिखो a company can issue renewed share certificate in following cases renewed share certificate in following cases तापरे requirements to issue renewed share certificate एडी फीस तीन पार्ट डिवाइड कर दबो हिंदी करिके मध्ये तमे लिखि परिबो where shares are consolidated shares are subdivided share certificate is old torn defaced or mutilated मुचा मुचा हो जाइछि किंबा चिरी जाइछि किंबा पुरना हो जाइछि बुढ़ी हो जाइछि ता मुह खराब हो जाइछि प्योर ट्रांसलेशन when pages for recording transfers have been used requirements कौन रिसीव सरेंडर ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ताकि ओरिजिनली जहाँ भी बुढ़ा हो जाइए कि पुराना हो जाइए कि चिरी जाइए सेटा देबार अच्छी कौन सरेंडर करियर अच्छी गेट अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फीस होची हमर 50 रुपीस
record details in register, record details in register, then state on the face, एटा important point आउ last point, state on face of renewed certificate, state on face of renewed certificate that it was issued in lieu of original share certificate, in lieu of original share certificate. माने आमे जिंदी व्हाट्सएप मेसेज रे टिके एडिट कर देले एडिटेड लेखाउनी सिंदी जेतळ को रिन्यू करिकि तमे नुआडा दोच कहले से ऊपर लिखिबो कि एटा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नै एटा अगेन इश्यू करा हेची कहिगिरी। तो से कोन कहया चाहछु देखो इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट जहाँ भी अच्छे सेटा केबे हबो ना दीडा शेयर्स कंसोलिडेट कर देले नुआडा दबो किमा डिवाइड कर दोचन देले भी नुआडा दबो हैला मिसी की जॉइंट शेयर्स किनथिले एबे तांको अलग अलग दरकार तो सिमिति भी हबो नाले अलग अलग किनथिले जॉइंट करिया चाहछुनी देन आल्सो सेंडी भी हबो। तो जदी शेयर्स कंसोलिडेट हे होची सब डिवाइड हे होची किमा चिरी जोची की डैमेज हे जोची किमा पेजेस सरी जोची तो ए चारटा केसेस रे नुआ शेयर सर्टिफिकेट आसीबो हमरो सेडा करिया पय तुमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सरेंडर करियार अछि, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रो अप्रूवल आनियार अछि, डिटेल्स रिकॉर्ड करिवार अछि आ कोन नुआडा जहा भी मिलेबो ता ऊपर लिखिबो कि इन ल्यू ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एडा अंडरस्कोर भितरे रखिबो आ फीस होची हमर 50 रुपीस पर सर्टिफिकेट। दैट्स इट, डन एंड डस्टेड विथ द कंपनी लॉ। ठीक अछि, किछि भी डाउट अछि कोहले पोर्शन को धरिकी यू कैन एंटर इन द कमेंट सेक्शन एंड द टेलीग्राम चैनल आल्सो, and all the very best for your upcoming exams. Thank you.